Hey there, welcome to FactSkull. So this is the final most letter and the foremost letter from the Ekito University. According to this is the final schedule for the several years date sheet. So according to this, third year, fourth year and fifth year will going to have the examination from 16th February. एंड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर की डेट शीट भी चेंज हो गई है. ऑलरेडी 2 टाइम हो चुकी है, बट दिस इज़ द फाइनल मोस्ट डेट शीट. So we will talk about the date sheet of B Farm third semester second year. This is the original date sheet from the admit card I have taken. So your first examination of BP301T Pharmaceutical Organic Chemistry second theory is on 9th of March 2021 and timing is in day shift 2 p.m. to 5 p.m. Next examination is after 3 to 4 days BP304T Pharmaceutical Engineering Theory on 13th of March 2 to 5 p.m. Then your examination of Universal Human Value and Professional Ethics of subject code KVE 301 is on 17th of March from 2 to 5 p.m. Timings are same for all the examinations and the gap between is very fair. You can study or revise your subjects for the pharmaceutical microbiology, as there is only one day gap for the microbiology, and it is on 19th of March. And your last examination of BP30OT is Physical Pharmaceutics first theory part on 22nd 3rd of 2021 March on from 2 to 5 p.m. So guys, date sheet 2 बार change already हो चुकी है, but this is the final mold date sheet. As you can see, it is from the admit card I have taken it. So this is the final. पहले की डेट शीट बहुत इसमें गैप कम थे, इसमें गैप ज़्यादा है. तो इसमें क्या हो गया है, इसमें गैप ज़्यादा है, तो आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं. सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन. एंड दिस इज सम इम्पॉर्टेंट नोट विच इज़ written as read carefully on the admit card. I'm reading for you, like at least an hour before the commencement of exam you have to report, and no entry is allowed after the examination. Means आपको at least in half an hour और 1 hour आपको पहले ही रिपोर्ट करना है at the exam center, और कोई एंट्री अलाउड नहीं होती even after the exam is started, unless you have some perfect reason for it. Then second is the student should bring the admit card होना चाहिए, और एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, लाइक आपका कोई भी कॉलेज का एक आईडी कार्ड होता है वो होना चाहिए, या कोई अदर वैलिड आईडी कार्ड. द थर्ड पॉइंट इज़ यू शुड एडवाइज टू फॉलो द COVID-19 सेफ्टी एंड सोशल डिस्टेंसिंग गाइडलाइंस. जो भी गाइडलाइन गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है वो आपको फॉलो करनी होगी वहाँ पे. देन प्लीज़ वेरीफाई योर एग्ज़ाम डेट, जो भी लेटेस्ट डेट शीट अवेलेबल है, एंड दिस इज़ द लेटेस्ट डेट शीट सो आई हैव गिवन फ्रॉम द एडमिट कार्ड. सो आपको वो डेट शीट वेरीफाइड होनी चाहिए, आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए जो आपके एडमिट कार्ड पे अवेलेबल हो. देन यू मस्ट राइट करेक्ट ऑन OMR नंबर ऑन योर एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड पे एक OMR नंबर लिखना होता है, तो आपको उसे अच्छे से फिल करना है. No mistake should be tolerated, and kindly keep checking circular at aktu.ac.in daily for updates in exam schedule. Although I am uploading all the updates from AKTU University, but you should also check from your side. So this is all. This is the date sheet for third semester B Farm AKTU University. All the best for examination. Do well, and if you have any query, please contact me. Thanks.